XKP XKPGNM. Good evening, everyone. Currently, the central candidate also he was instrumental in enabling members to get his 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 WhatsApp community groups have made knowledge discipline, knowledge sharing, and updates very easy for members. He has addressed many seminars and recently on audit trail. He was the immediate past president of Views Exchange
He had initiated a series of seminars called Manthan, conceptualized on Samundar Manthan or Vishnu Puran. Sir gave representations to various government bodies on behalf of CA community and ensured that college audit fees gets increased multiple times. His uh, his his WhatsApp community groups have made knowledge sharing and updates very easy for members. Thank you for being available for all of us. Om Ukram Veeram Vishnum Charantam Sarvatomukham Narasimham Bhishranam Bhadram Mrityur Namamiham. Hmm. Hi, baby. बोलो देख
हम्म। 7,000, okay. The data of both locations. Credibility, 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 credibility. Free, 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 free. You know? क्या खाने का कुछ है नहीं तो ये बोला ऑर्डर करें।
परेशान थे थोड़ा, अभी भी ये महीना परेशान रहे। Let me just check. Zoom is unable to detect camera.
हेलो। बोलिए सुजीता। ठीक है। ठीक है, चल रहा है भाई। मैंने बताया ना। नया उन्नति वाला। नहीं 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 हुआ ना, अभी तो ये लोग सब मैनुअल मांगा है। हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी तो रिलीज, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी में कोई प्रॉब्लम नहीं था कि क्लेम किया तो जो ये जो पॉलिसी है ना, इसमें इसमें ट्रांसपोर्ट सब्सिडी ओनली फिनिश गुड्स पे था। एंड वो भी बाई बाई ट्रेन और फ्लाइट से जब माल आएगा तब था। तो इसलिए ज्यादातर आदमी इसको क्लेम ही नहीं किया इस बार। क्या चीज की? फीस तो नहीं होगा। मैं एक नंबर देता हूँ आपको, ठीक है? आप उनसे एक बार मेरा नाम लेके इसे बात कर लीजिएगा। ठीक है। विकास विकास बोल के है, विकास शर्मा। उसके पास कुछ होगा तो दे सकता है वो। मैं आपको मैसेज करता हूँ उनका नंबर, ठीक है? जी हाँ। हाँ हाँ, दे दीजिएगा। हाँ।
गोपाल गोपाल वो एक बार रजिस्टर लेके आना। मिला है, मिला मतलब उसको पेमेंट हुआ होगा है। तो इसमें विकास है तो मतलब आया था तो सर है हाँ आया हाँ ढाई भी आया है दो भी आया हाँ। क्योंकि वो जो वो ये देखना वो जो 1 लाख से पहले जो आया था ना फर्स्ट उसके केस में कोई पेमेंट नहीं बना वो चीज चेक करना है कोई। नहीं नहीं कोई नहीं किया मतलब वो पहले तो एक वही मंगाया था मतलब एक क्वेश्चन मनी जो होता है ना। बैंक स्टेटमेंट I would request all the participants to please keep themselves muted in the course of the seminar. In case you have any question, you can raise your hand, and if the speaker feels right, he'll allow you to speak. We shall be starting the seminar in next few minutes. Our speaker is on the way, so our meeting shall be starting at 8 p.m. sharp. Thank you so much.
मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई। आज सबने म्यूट किया है। सबने म्यूट किया है। हाँ, दीपक कुमार चौधरी मेंबर म्यूट किया है सबने। कर दो। थोड़ी आवाज आती होगी उनसे, उनकी आवाज नहीं आती पई। नहीं स्टार्ट हुई मीटिंग। कर्ण के Requesting everybody to please test their speakers and mic because the voice over here is absolutely fine. The connection is absolutely fine. Thank you.
Many delegates are telling that the voice is not audible. I would request you all to please check your mics. There's an option of audio settings wherein you can test your mics and speakers. Thank you. Sir, it's audible. Yeah, because I am getting some chats. No voice, But no. let's start, sir, please, if possible. Yes, sir, for sure. Because our speaker is on the way. He was stuck in some traffic jam, so he'll just be reaching in 5 to 10 minutes. He was telling. Okay. Thank you so much. Hello. हाँ चलेंगे हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। दूसरी पढ़ा है, कोडिंग सामने चला के देखते हैं। चलिए अच्छा चलाओ, 5 कदम।
कान वाला लो। मेरा आवाज आ रहा है क्या? देखो तो, आ रहा है? अरे एक मिनट, गिरारी से पूछ लो। Requesting all the participants and delegates to please keep yourselves muted.
Naveen, Naveen, can we start in 5 minutes? Can we start in 5 minutes? Yes, sir. Yes, किसी sir. की Sure. पीपीटी शेयर करने में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, Okay. 5 मिनट में हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, Fine, sir. Fine, sir.
नवीन स्क्रीन शेयरिंग इनेबल कर देना. सर वो enabled ही है, बट हम एक काम करते हैं, आई एम मेकिंग यू द होस्ट, तो माइट भी उसके एक कारण हो मिनट रहा. एक मिनट एक मिनट रुको, एक मिनट हाँ मैं हाँ देखता हूं. हाँ, आ रहा है. ठीक है नवीन, वी कैन स्टार्ट. Okay, sir. We are starting now. Good evening to each and everyone present. In this month of tax audit and GST reconciliations, we have a very different topic, and our speaker is none other than CA Nitesh More. He was the past president of EIRC, and he's the and currently the CCM candidate. Also, he was instrumental in enabling members to get lakhs of CPRs. He has addressed many seminars on Audit Trail recently. He was the immediate past president of Use Exchange CA Study Circle, Kolkata. He had initiated a series of seminars called Manthan, conceptualized on Samundar Manthan of Vishnu Puran. Sir gave representations to various government bodies on behalf of CA community and ensured that college audit fees gets increased multiple times. His WhatsApp community groups have made knowledge sharing and updates very easy for members. Welcome, sir, and thank you for being available for all of us. Now, I would request sir to start with his deliberation. Thank you, sir. The link is also available on YouTube. In case anyone wants to see from there, they can also use the link. Very good evening everyone. First of all, thank you Views Exchange, Naveen, for coordinating the event. Even at 5 p.m. today, this program is organized today. 73 participants have joined and many are viewing at the YouTube channel. So thank you everyone for I think there is no voice problem from our end. Please check your voice at your end because most of us are getting the voice. The voice of most of us are okay. So please, I would those who request the have, participants to increase the volume of their phone or the laptop. I think the volume is low because of that. Thank you, sir. Sorry for interrupting. not an issue. So those who have a volume problem, I am giving them 1 minute time so that they can adjust their volume. And in next one, after 1 minute, I am starting the session so that they can, the system problem they are having, they can adjust that.
First of all, my apology for the delay. The delay was due to huge traffic today. I had a session at DVD Bagh at Dalhousie. Then I rushed on to here, but there was a huge traffic today due to this Lal Bazaar and everything issue, whatever. So thank you for organizing this program. Now today's session audit trail. First of all, why MCA thought that this provision, Naveen, this PPT is visible, na? Yes, sir. Yes, sir. It is visible, sir. So, okay. So first of all, why provisions relating to audit trail? Why MCA thought that they should come out with a such provision? Let me tell you that India is the first country which has implemented audit trail provision. It means no developed country, either USA, Japan, no country, China, no country have this provision. India is the first country which has implemented the audit trail. Before that, let me ask you, और आप लोग अपने चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा, so that you are also involved. Which provision of the Companies Act says कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी को मेंटेन करना है? कौन से सेक्शन में कंपनीज एक्ट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स से रिलेटेड प्रोविजन है? एक ही सेक्शन है which is about books of accounts, maintenance of books of accounts. कौन सा सेक्शन है? Anyone? (128), 143(3). So 128, 128(5). The section is 128. 128(1). What it says? It says that every company shall prepare and keep at its registered office books of accounts on accrual basis and double entry system. Such books of accounts which gives true and fair view of states of affairs of the company. ऐसा books of accounts at registered office and its branches maintained करना पड़ेगा कंपनी को. So 128 is the section which is relating to maintenance of books of accounts as far as the Company Act is concerned. So now what is the significance of this section? 143(3). somebody says 143(3). 143 में हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि क्या हम लोग को है, that we will see. But maintenance of books of accounts, that is 128 और 128(1) में says, it says कि ऐसा books of accounts मेंटेन करना है which gives true and fair state of affairs of the company. यदि हम ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और या कोई एक्टिविटी ऐसा करते हैं लाइक डिलीटिंग द एंट्री और एडिटिंग द एंट्री, बट ऐसा एक्टिविटी करने से इट विल रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट्स ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ऐसा होगा, then that act is justified. So any delete or edit is justified only if it reflects true, it is for maintaining a books of account which reflects true and fair state of affairs of the company, in my opinion. Number 2, the proviso says, 128(1) का proviso says कि यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो आपको रूल्स फॉलो करेंगे विच में भी प्रिस्क्राइब. इसी प्रोविजो के तहत 128(1) के प्रोविजो के तहत कंपनीज अकाउंट्स रूल्स मेंटेन, कंपनी अकाउंट्स रूल्स नोटिफाई हुआ, जो
1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल हुआ। So then the question arises, the next question arises, क्यों ये रूल लाया? Because many of the companies, they at the time of filing or near to the date of filing, they were maintaining the books of accounts. So the MCA thought कि हमको books the rules notify करेंगे, and they had notified the rules, perhaps in my opinion. अब the next question arises, यदि कंपनी नेक्स्ट ईयर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है, तो क्या दिस इज प्रॉपर? इन माय ओपिनियन, नाउ विद द ऑडिट ट्रेल सॉफ्टवेयर, if you maintain it, after it, if you create it and maintain it afterwards, then the trail itself will reflect that the company has not maintained proper books of accounts in the year. So in my opinion, you will be violating 128(1), and the penalty as prescribed under section 128(6) will be applicable. 128(6), what it says, MD, whole-time director finance, CFO, or any other person notified, or any other person charged by the board with the duty of complying of this section, such contravention, so he will be responsible. And suppose in case of ITC, whom the so-called notice can be issued or penalty can be levied? MD, whole-time director finance, CFO, and suppose GM finance has been charged by the board, so he can also be charged. So 4 so-called notices can be issued. Say, suppose in case of a closely held company, private limited company, जहां पे से फैमिली के 6 मेंबर्स, 8 मेंबर्स डायरेक्टर्स हैं, सो इन केस कोई एमडी नहीं है, कोई होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, कोई सीएफओ नहीं है, और कोई भी पर्सन उन्होंने नोटिफाई चार्ज नहीं किया है बोर्ड ने बाय पासिंग ए रिजोल्यूशन, और उनका जीएनएल फ्री फाइल नहीं किया है, in that case, say whole 6 directors, they can be, or 8 or 10 directors, they can be issued so-called notice, and accordingly penalty can be, say 10 director case में 5 लाख into 10. So if company notify one person, say one director, by passing a board resolution, he will be charged with the duty of complying the provision of this section, then such contravention. So GNL 3 will be filed accordingly, and that such person, he now can be issued so-called notice. Now, suppose in this year, the company, suppose one director has been, by passing a board resolution, one director has been charged with, or one person, any other person has been charged with, say GM finance or some other person. So now he is responsible, and GNL 3 is accordingly required to be filed. And suppose the auditor, he has say qualified his report, ये contravention हुए हैं, then now the penalty is 50,000 to 5 lakh. The question arises, can company go for compounding? The answer is yes. Say RD 5 lakh तक की penalty है. RD is now is the perhaps the appropriate authority for this compounding. So an application can be filed accordingly, and you are going voluntarily. Now perhaps minimum penalty of 50, 60, 70,000 will be levied by the ROC perhaps. So this type of things also you can do. If you have done the contravention, now you can go for compounding. What is audit trail?
Audit trail are a chronological record of changes that has been made to the data. What it contains? It contains who had made the entry, who have edited, who have deleted, when he have done this, and what are the whole content. So now this is a screenshot of edit log. What it contains, किसने एंट्री किया और कब किया. Now this is a screenshot of what he has done. Content. Suppose 25 बार यदि एंट्री चेंजेस होते हैं तो 25 स्क्रीनशॉट इस साइट के बन जाएंगे. से इसमें 11,000 से 5,500 the amount has been changed, is that has been highlighted in red. So this is what he has done. So now in the next screenshot, version 3 and 4, this was the first change. It is version 1 and 2. Now this is the second change, version 3 and 4. Now what is the narration has been changed. So in the narration you will see the red slot. So what MNCs are facing? MNC, suppose they are taking a software and and the whole global business will be entered there. So they are facing कि उनको केवल requirement तो है India का. Now he has to maintain everything for global business. Otherwise उनको अलग सॉफ्टवेयर इनके लिए लेना पड़ेगा और वहां के लिए अलग लेना पड़ेगा और फिर उसका कंसोलिडेशन में भी प्रॉब्लम आएगा. Then software cost, then server space. जितने ट्रांजेक्शन होते हैं जितना एडिट होता है सबका अलग स्क्रीनशॉट. सर्वर स्पेस, हार्डवेयर, larger hardware capacity is required, and other processors, RAM, everything, the cost of everything will be increasing. Now for small companies, what they are facing, suppose 1 लाख की कंपनी है, उनको सॉफ्टवेयर का ही कॉस्ट आ जाएगा से 40,000 45,000 ऑडिट ट्रेल इनेबल सॉफ्टवेयर का. So but there could be cost, but reliability will be higher of each and every stakeholder, whether it is shareholder, whether it is government or auditors. So that is the benefit. So what is audit trail? Audit trail are nothing but a chronological record of changes that have been made to the data. What is accounting software? It is a computer program that enables recording, maintenance, and reporting of data, and relevant ecosystem is applicable to the requirement. So Tally, Zoho, all these are busy, all these are relevant ecosystem is there. So these are the accounting software. But is Excel an accounting software? The answer is perhaps no. Is Excel an accounting software with audit trail feature? No, it doesn't have the audit trail feature. Books of accounts. What it says, books of accounts includes records maintained in respect of money receipts paid. Sales is also covered. So what is its implication? Implication is आपका एक शोरूम है, उस शोरूम में हम टैली में और बिजी में या जोहो में से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, लेकिन अलग सॉफ्टवेयर है जिससे डेली सेल्स जो है उससे उसमें मेंटेन होता है. दैट सॉफ्टवेयर मस्ट आल्सो हैव द फीचर ऑफ ऑडिट ट्रेल. दैट सॉफ्टवेयर आल्सो मस्ट हैव द फीचर ऑफ ऑडिट ट्रेल. Prescribed cost records you are required to maintain in case of certain class of companies. So those are books of accounts, assets and liabilities. So who will decide the manner of maintenance of books of accounts? कि कैसे मेंटेन करना है, हमको मैनुअल मेंटेन करना है या हमको सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विद ऑडिट फीचर में मेंटेन करना? Who will decide? It is the management who will decide. What is our duty? हमारा ड्यूटी तो केवल इतना है कि मैनेजमेंट ने एज पर लॉ मेंटेन किया है कि नहीं किया है उसको देखना और रिपोर्ट करना. अकाउंट्स रूल्स कब से एप्लीकेबल है? 1 अप्रैल 2023 से. But it says every company which uses accounting software for maintaining its books of accounts shall use only such software
So they can't use any other software which has a feature of audit trail. ऐसा ही software for each and every transactions. So transaction का edit log होना चाहिए, यहाँ तक ये है. Then create and edit log of each and every changes also. So by changing the master, by changing the ledger or group, you are changing the books of account. उनका भी trail होना चाहिए. By splitting the data of data file, वहां पे भी you are changing the data, वहां पे भी होना चाहिए. Along with the date होना चाहिए. And along with the date when such changes is made, then please note this line. And ensuring that audit trail can't be disabled. इसका implication क्या है कि हम टैली के कुछ सॉफ्टवेयर में आप या और किसी सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन है, आप ऑडिट ट्रेल सेटिंग में जाके ऑडिट ट्रेल को यस और नो करके इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं. ये भी नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए. एंड यू हैव टू इंश्योर दैट ऑडिट ट्रेल कांट बी डिसेबल्ड. यस और नो नहीं कर सके, ऑडिट ट्रेल को इनेबल और डिसेबल नहीं कर सके, इनेबल ही रहना चाहिए. ऑडिट ट्रेल इनेबल ही रहना चाहिए. अदरवाइज यहाँ पे यस और नो करने का ऑप्शन है, तो यू हैव टू रिपोर्ट because it will not be in compliance with the rules, because you have to ensure that audit trail can't be disabled. Please note, audit trail can't be disabled. Then हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी ड्यूटी तो हमको 143 में we have to report. एक पैरा है, we have to insert. कैसा होगा वे पैराग्राफ? We will see. Then the question arises, what could be penalty for an auditor for misreporting? यदि आपने misreporting की और बाद में ये पता लगा, वहां पे सर्वे हो गया या आरओसी के द्वारा एक्शन किया गया और पाया गया कि जो आपने रिपोर्ट में नहीं दिया था, जो दिया था, that is not correct, so you could be liable for a penalty. One, there could be a disciplinary action by ICI or NAFRA, as the case may be. This is one. But apart from that, the question is, what is the penalty under the Companies Act? हम 140 क्योंकि सेक्शन में नोटिफाई नहीं है, 450 is the section which is applicable for any penalty in the Companies Act. जहां जिस सेक्शन में जिस रूल्स में कोई भी पेनल्टी प्रिस्क्राइब नहीं है, तो पेनल्टी कैन बी 10,000 प्लस 1,000 फॉर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट. सो 23-24 का पेनल्टी से 2021 तक चल रहा है. नाउ 2021 में दे विल कितनी पेनल्टी हो सकती है? द क्वेश्चन इज, कितनी 2021 में देयर इज ए इंस्पेक्शन फ्रॉम द आरओसी, कितनी पेनल्टी हो सकती है? द पेनल्टी कैन बी, प्लीज कैलकुलेट द पेनल्टी एंड प्लीज पोस्ट इन द चैट बॉक्स. कितनी पेनल्टी हो सकती है? एनीवन? दो 2021 में इंस्पेक्शन हुआ, 23-24 से रिलेटेड है, कितनी पेनल्टी हो सकती है ऑडिटर को मिस रिपोर्टिंग करने में? उसने मिस रिपोर्ट कर दिया कि ऑडिट ट्रेल है जबकि नहीं था. सो 10,000 प्लस 1,000 इंटू 365, 3,65,000 प्लस 10,000, 75,000 और 31 तक इंटू 7 साल से 7 साल 8 साल. सो दैट कुड बी पेनल्टी ऑन द ऑडिटर. हमारी फीस कितनी और पेनल्टी कितनी लग सकती है? सो नाउ ये पुरानी एक रिपोर्ट है. नाउ 143 में व्हाट वी आर सीइंग, हम लोग क्या रिपोर्ट करते हैं? एज रिक्वायर्ड बाय द सेक्शन 143, वी रिपोर्ट दैट इन आवर ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स as required by law has been kept by the company.
So this you are saying has been kept by the company. Then what you are saying कि बैलेंस शीट सी में देखिए, बैलेंस शीट are in agreement with the books of accounts. What is its implication? हम जिस डेट को साइन करें, हमारा ट्रायल बैलेंस, सारी की सारी एंट्रियां बुक्स ऑफ अकाउंट्स सॉफ्टवेयर में पोस्ट हो जानी चाहिए, एंड so that we can report the balance sheet, PL and CFS are dealt with, are in agreement with the books of accounts. So this we have to ensure हमारे सारे के सारे क्लाइंट का on the date of signing, सारे के सारे क्लाइंट्स का जो भी एडजस्टमेंट एंट्री और अदर एंट्रीज है वो पास हो गई हो. This we have to ensure. This we have to ensure. Please note, this we have to ensure. यदि हमें शॉर्टर नोटिस भी देनी पड़ती है से 28 सितंबर तक, that won't be much problem for closely held private limited company, but we have to ensure that these are books of accounts, financial statements are in agreement with the books of accounts. Please note, otherwise what you are reporting is not correct. हमें ट्रेल से रिलेटेड से रूल 11 का यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं हम. यहाँ पे एक पैरा से पैरा 4 में हम वी विल रिपोर्ट ट्रेल से रिलेटेड, ऑडिट ट्रेल से रिलेटेड एक पैरा भी है तो इंसर्ट हियर. क्या इंसर्ट करना है, क्या फॉर्मेट है उसका, क्या ड्राफ्ट है, इन डिफरेंट सिचुएशन वी विल सी लेटर. Rule 11G requires auditors to report whether the company has used such accounting software for maintaining books of accounts which has the feature of audit trail, and the same has operated throughout the year for all transactions, and the trail feature has not tempered and preserved by the company. कितने तक के लिए, कितने दिन तक के लिए प्रिजर्वेशन होना चाहिए, ये भी ऑडिटर को चेक करना है कि ये प्रिजर्व है as per the statutory auditor retention. So my question is, ये पीरियड क्या है? So current year प्लस बैक का 8 साल. So 2031 में यदि हम देखेंगे तो हमको 23-24 से लेके 8 साल तक का बैक तक का देखना पड़ेगा. यदि 25-26 में यदि हम लोग ऑडिट कर रहे हैं तो हमको 23-24 से देखना पड़ेगा. तो 23-24 से हमको देखना पड़ेगा 8 साल का. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम कैसे, देयर इज वन ओल्ड से चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज ऑफ 80 इयर्स, एंड वो दिस सॉफ्टवेयर से इज नॉट कंफर्टेबल कि थ्रू आउट द ईयर ऑपरेटेड हुआ कि नहीं हुआ, और ऑल ट्रांजेक्शन ट्रेल है कि नहीं है, टेम्परिंग हुई कि नहीं हुई, he is not comfortable and preserve. So what he can, the question is, can he take an help from an expert? The answer is yes, he can take help from expert also on this, and accordingly he can report based on taking the opinion from the expert. इसके लिए इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट भी है that he has to follow, but he can take, and this but responsibility तो हमारी उन्हीं की रहेगी because he is reporting, but the opinion he has taken, that will always act as a shelter to him if something arises, question arises in future. कब से एप्लीकेबल है अकाउंट्स रूल्स? 1 अप्रैल 2023 से. Now this, any software that maintains records or transactions that falls under the definition of books of accounts will be considered as accounting software. So आप एक्सेल में अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते हैं एज पर द इम्प्लीमेंटेशन गाइड ऑफ द ICI. आप किसी सॉफ्टवेयर में नहीं मेंटेन कर सकते हैं. यदि सॉफ्टवेयर में मेंटेन करेंगे, इट हैज टू बी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एज पर द इम्प्लीमेंटेशन गाइड ऑफ द ICI. And
अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन करना पड़ेगा, और रूल्स कहता है इट शुड बी विद द ऑडिट ट्रेल फीचर। सो आप सॉफ्टवेयर में, एक्सेल में या और किसी सॉफ्टवेयर में विदाउट ऑडिट ट्रेल फीचर के मेंटेन नहीं कर सकते। हाँ, आप मैनुअली मेंटेन कर सकते हैं, और मैनुअली मेंटेन करेंगे तो आप वो फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। द क्वेश्चन अराइजेज नाउ, इसका इंप्लीकेशन देखिए। आपके जो शोरूम है, उस शोरूम में टैली में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें विथ ऑडिट ट्रेल फीचर उसमें मेंटेन हो रहा है, लेकिन वो जो सेल्स रिकॉर्ड हो रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में भी ऑडिट ट्रेल का फीचर होना चाहिए। वो नहीं है तो यू हैव टू रिपोर्ट, यू हैव टू रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेल्स इज कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। सो यू हैव टू इंश्योर, यू हैव टू इंश्योर, यू हैव टू इंश्योर कि वो सॉफ्टवेयर में भी बुक्स, क्योंकि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के डेफिनेशन में आ रहा है। जैसे शुगर कैन फैक्ट्री है, शुगर कैन फैक्ट्री में कैन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, दैट मस्ट हैव द फीचर ऑफ ऑडिट ट्रेल। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, दैट मस्ट आल्सो हैव द फीचर ऑफ ऑडिट ट्रेल, यदि वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में मेंटेन करता है तो। हॉस्पिटल में ऑपरेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, उसमें भी ऑडिट ट्रेल का सॉफ्टवेयर होना ही होना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, यदि आप मेंटेन करते हैं मैनुअली तो यू हैव टू डिस्क्लोज द फैक्ट। सारी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट की है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल इतनी है, ये देखने की है कि मैनेजमेंट ने एज पर लॉ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया है कि नहीं किया है, और यदि नहीं किया है तो उसको रिपोर्ट करना, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि आप एक सर्वर जो आउटसाइड इंडिया है उसमें मेंटेन करते हैं, तो एमसीए का एक सर्कुलर आया है जिसमें ये बोलता है कि एवरी डे यू हैव टू टेक द बैकअप। सो ऑडिटर 11U requires auditor to report on audit trail by making a specific insertion। एक पैरा आपको इंसर्ट करना पड़ेगा और उसमें कमेंट करना पड़ेगा कि ऑडिट ट्रेल इज कॉन्फ़िगर्ड और नॉट, है कि नहीं है, फैक्ट यू हैव टू डिस्क्लोज। और ये है तो थ्रू आउट द ईयर है कि नहीं है, whether all accounting, whether all transactions recorded in the software are covered in the audit trail feature or not, or and whether audit trail preserve as per the specific requirement for reporting, or that is 8 years, that you have to see. So any software that maintains records that falls under the definition of books of accounts, जैसे सेल्स आ गया और सेल्स दूसरे सॉफ्टवेयर में मेंटेन्ड है, या फिक्स एसेट रजिस्टर आ गया वो दूसरे रजिस्टर में मेंटेन्ड है, सॉफ्टवेयर में मेंटेन्ड है, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। यदि आप मैनुअली मेंटेन करते हैं, इवन आप मेंटेन कर रहे हैं इसे फिक्स एसेट रजिस्टर मैनुअली, in my opinion it is allowed and you can disclose the fact कि फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन करते हैं मैनुअली। इन्वेंट्री यदि मैनुअली मेंटेन करते हैं तो यू कैन डिस्क्लोज द फैक्ट एंड यू कैन कि इन्वेंट्री जो है वो मैनुअली मेंटेन होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर में यदि मेंटेन करेंगे तो आपको केवल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ही मेंटेन कर सकते हैं, एंड दैट टू विद द ऑडिट ट्रेल फीचर। ये रूल्स ये ऑल क्लास ऑफ कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, वेदर छोटी कंपनी हो, सेक्शन 8 की कंपनी हो, या फॉरेन कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, ऑल क्लास ऑफ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, वेदर 1% कंपनी हो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। और यदि आप मैनुअली मेंटेन करते हैं, यू हैव टू डिस्क्लोज द फैक्ट। नाउ सीएफएस के केस में द प्रिंसिपल ऑडिटर शैल अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट एंड कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स using the work of another auditor while assembling the matters reported by the auditors of the component that are of Indian companies. So foreign companies के केस में you can disclose कि ये foreign company है, से subsidiaries या associate foreign हैं, foreign company है, तो you can disclose और accordingly applicable नहीं है। लेकिन यदि Indian companies हैं तो वहां पे you can compile and you can report accordingly
एंड दैट आप मेटर्निटी कंसेप्ट भी यू कैन यहाँ पे ले सकते हैं. सपोज इन लेट अस टेक एन एग्जांपल कि 4 सब्सिडरी कंपनी है और एक का से 0.001% की टोटल एसेट के टोटल एसेट एंड टोटल ट्रांजैक्शंस के रेस्पेक्ट में, so that you can ignore even, or you can while compiling. So materiality concept you are here perhaps you can take, and accordingly you can report based on the reports of another auditors. So you can in case of CFS जो अदर कंपोनेंट के ऑडिटर हैं उन्होंने क्या रिपोर्ट किया है उसको कंपाइल कर सकते हैं आप, उनका ओपिनियन जो दिया हुआ है ऑडिट रिपोर्ट में उसके हिसाब से यू कैन टेक बाय फॉलोइंग SA 600. Please note, you have to ensure that audit trail is appropriately protected from any modification. So यदि सिस्टम में डेट चेंज करके कुछ किया जा सकता है तो you have to ensure that audit trail is appropriately protected from any modification. So that you also auditor has to ensure. Specific internal control. So what it says कि आप से कंपनी क्रिएट करते हैं उसके बाद में 10 लोग हैं कंपनी में जो अकाउंट्स में एंट्री करेंगे या एडिट करेंगे या व्यू करेंगे. सो यू हैव टू असाइन सेपरेट यूजर आईडी टू ईच इंडिविजुअल एंड दे शुडंट शेयर पासवर्ड और पासवर्ड्स ऑफ इट. सो दैट यू हैव टू इंश्योर. ऐसा नहीं हो कि एक ही यूजर आईडी से 2 लोग अपना पासवर्ड शेयर करके काम कर रहे हो. दैट यू हैव टू इंश्योर. This we have already seen. This is screenshot, user ID and date and time. Audit approach. That we whatever we do on test check basis. That is there. So same in case of here also. In case of service organization, what is it? What it is? What is a service organization? Suppose in case of Reliance, say payroll का जो काम है, entry का काम है, that has been given to some other enterprise. So वो payroll का काम करेंगे. So suppose they are doing it in their software. So in case the accounting software is supported by service providers, management and auditor may consider using independent auditor's report of the service organization. उनका जो auditor है उसका report पे भी use कर that he can rely. And accordingly he can report. So throughout the year we know. Now this is a draft para. In case of everything is okay, say everything is okay in the company, so how you will report? You will report based on our examination, which included test check. The company has used an accounting software for maintaining its books of accounts, which has a feature of recording audit trail facility, and same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software. Further, during the course of our audit, we didn't come across any instance of audit trail feature being tampered. Additionally, the audit trail has been preserved by the company as per the statutory requirement of record retention. So what is this modified opinion? So unmodified opinion ने हमें कहा कि throughout the year audit trail feature है और टेम्परिंग नहीं हुई है और ऑडिट ट्रेल जो है दैट हैज बीन प्रिजर्व एज पर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट. ये हमने रिपोर्ट किया. लेकिन यहाँ पे हम क्या रिपोर्ट करेंगे कि सब कुछ ठीक है एक्सेप्ट द फॉलोइंग. सो इम्प्लीमेंटेशन गाइड में ये 5 सिचुएशन है, हम उनको भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद में आप लोगों की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के हिसाब से डिफरेंट सिचुएशन में मैंने भी कुछ डिफरेंट सिचुएशन में कैसे रिपोर्ट करेंगे
वो भी मैंने तैयार किया है, वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वो 5 सिचुएशन डिस्कस करते हैं। मैंने वो टिप्स में भी दिया है, ऑडिट ट्रेल के ऊपर टिप्स 1 to 11 मैंने भेजा है। उसमें भी 3-4 टिप्स में क्या डिफरेंट सिचुएशन में हम रिपोर्ट करेंगे जो आप लोग के लिए रेलिवेंट है, वो मैंने डिस्कस किया है। अभी इम्प्लीमेंटेशन गाइड में क्या दिया है वो सिचुएशन डिस्कस करते हैं। ये पहले सिचुएशन में है कि फिक्स एसेट सॉफ्टवेयर एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में है विच डजंट हैव द फीचर ऑफ, सो इट प्रिज्यूम्स कि एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर में फिक्स एसेट रजिस्टर मेंटेन हो रहा है एंड दैट डजंट हैव द फीचर ऑफ ऑडिट ट्रेल। उसमें हम कैसे रिपोर्ट करेंगे, ये है फर्स्ट। नंबर 2, ऑडिट ट्रेल इज नॉट ऑपरेटेड इफेक्टिवली थ्रू आउट द रिपोर्टिंग पीरियड फॉर पेरोल रिकॉर्ड, से पेरोल रिकॉर्ड। उस केस में हम कैसे रिपोर्ट करेंगे, वो इस सेकेंड सिचुएशन में है। तो पेरोल के लिए नहीं, के लिए यहाँ पे से दिया हुआ है एक एग्जांपल। एक पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है जहां पे टीचर एक्टिव नहीं है, ये 2 सिचुएशन है। पहला, नाउ थर्ड सिचुएशन में क्या हुआ कि accounting software is maintained, so the say payroll that is maintained by third party, and he is not giving me access to the auditor to assess whether the audit trail feature is disabled or not. So he is not giving me the access, I want to have the access, but third party is not giving, जहां पे मेरा payroll maintain है। So इस केस में कैसे रिपोर्ट करेंगे, this is the third situation which implementation guide। Now fourth situation, कि trail is not preserved for the statutory requirement, so this is the fourth situation। उसमें कैसे रिपोर्ट करेंगे, तो फोर्थ सिचुएशन है। नाउ फिफ्थ सिचुएशन इंप्लीमेंटेशन गाइड में जो दिया हुआ है वो है एक सिचुएशन जिसमें से टैली से हम एक ड्यूरिंग द ईयर टैली से एसएपी में हुए, और से प्रीवियस जो वर्जन था टैली का, जो टैली था, टैली में डजंट हैव द फीचर ऑफ ऑडिट। सो कैसे हम रिपोर्ट करेंगे, ये 5वां सिचुएशन। अब आपका जो अदर सिचुएशन है जो थ्रू आउट द ईयर मेंटेन नहीं हुआ, वो कैसे करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर जुलाई से मेंटेन हुआ या वो सब जो है वी विल डिस्कस इन लेटर ऑन। जो मेरे कुछ ड्राफ्ट बनाए हुए उसमें वी विल डिस्कस। नाउ वेयर टू रिपोर्ट द कंट्रावेंशन, यदि कंट्रावेंशन हुआ है तो कौन से रूल्स में और कौन से सेक्शन में वी विल रिपोर्ट, कहाँ कहाँ वी विल रिपोर्ट। पहला 11G में, ये जो हमने देखा कि ये पहला 11G में हम ऑडिट ट्रेल पे देंगे, यहाँ पे भी हैव टू रिपोर्ट द कंट्रावेंशन ऑफ ट्रेल यदि ठीक से नहीं है या कुछ भी नहीं है ठीक से, यहाँ पे वी हैव टू सी। देन सेकंड इंपैक्ट वी हैव टू सी 143 का जो रिपोर्टिंग करते हैं वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज बीन मेंटेन्ड, वहां पे वी हैव टू सी सब्जेक्ट टू आवर ओपिनियन on this paragraph on audit trail, उसका पैरा का रेफर देखेगा you can see. Then 143(3)(x) says कि qualification, reservation और adverse remark relating to fixed accounts, उसमें भी have to report, so this we have to see. Then IFC में यदि कोई material misstatement होता है that we have to report, तो वहां भी we may have to report यदि material misstatement हो रहा है तो that we have to see कि कोई भी contravention हो रहा है ट्रेल से रिलेटेड, तो ये 4 जगह 4 सेक्शन में देयर कुड बी एन इम्प्लीकेशन दैट वी हैव टू सी। केवल 11G में ही होगा ऐसा नहीं है, ये 4 जगह में रिपोर्ट हो सकता है, ये 4 सेक्शन में इम्प्लीकेशन आ सकता है, दैट वी हैव टू सी। केवल 11G में ही हो ऐसा नहीं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इन केस ऑफ फ्रॉड, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट, these are there। सो ठीक है, रिस्क कितना मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, फ्रॉड वगैरह, दैट वी हैव टू सी द मैग्नीट्यूड एंड एवरीथिंग, सो दीस थिंग्स आर देयर। ऑब्टेनिंग रिटन रिप्रेजेंटेशन, सो ऑडिटर शैल ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैनेजमेंट। सो जो इम्प्लीमेंटेशन गाइड ऑफ द आईसीआई है उसमें ड्राफ्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट भी दिया हुआ है। सो that you can that is the draft you can take from the implementation guide, and accordingly you can obtain it from the management. But one question arises,
यदि आपने बोर्ड्स रिपोर्ट में या मैनेजमेंट ने ये लिख के दिया है कि ट्रेल फीचर है, इनेबल्ड है, या बोर्ड रिपोर्ट में ये लिखा है कि ट्रेल फीचर इनेबल्ड है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है, तो मैनेजमेंट representation are the starting points. Then you take the representation from the management and you have to now inquire कि उन्होंने जो लिख के दिया है that is true or not. It is now auditor's duty to verify this is as per the law or not, whether whatever written in the management representation is okay or not. If you can verify and you are not verifying, that can't be a safeguard to you and you can't report on that basis. So if there is a contravention, the things, the trail feature is there, you can't write in the report, and then you can't, on that basis, you can't report that everything is okay. Both the penalty will be imposed both on the management as well as on the auditor, apart from the disciplinary action of the ICI. In case the inquiry is taken or something misreporting is done, please note. So please don't do this. Please report whatever is as per fact. We can't take that risk. Please. Now this tally का एक लेजर का, if you see, use effective date for voucher. दिस इज, ये नो किया हुआ रहता है, इसको आप यस यदि करेंगे उसके बाद तो एक लेजर है, उसमें यदि आप यस करते हैं और उसके बाद में F2 प्रेस करते हैं, नाउ 2 डेट्स यू कैन पुट इन द टैली. सो ऑडिट ट्रेल का जो डेट है दैट विल बी टुडे. ट्रेल को आज के दिन जब एंट्री करेंगे तब जनरेट होगा. सो डेट ऑफ वाउचर विल मैच विद द टैली एंड इफेक्टिव डेट कैन बी से 10 दिन पहले का डेट, जिस डेट का वो ट्रांजेक्शन रिलेटेड है. सो ऐसा करने से क्या होगा, छोटी कंपनियों के केस में व्हाट वी सी कि उनके, ये सब मैं छोटी कंपनियों के लिए इसलिए बता रहा हूँ, छोटी कंपनी के केस में प्रॉब्लम क्या होती है कि उनके जो है अकाउंटेंट नहीं होते हैं, या अकाउंटेंट जो होते हैं वो 15 दिन में, 7 दिन में या महीने में एक बार आते हैं. तो उन कंपनियों को इंश्योर करना चाहिए कि जो वो कंपनी के पास में एक वे मैंने देखा कि एक वे है कि वो इफेक्टिव डेट ऑफ वाउचर एंट्री को यहाँ एक्टिवेट करके उनका एडिटोरियल का जो डेट है वो डेट ऑफ वाउचर से मैच कर जाएगा और इफेक्टिव डेट विल बी द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से मैच कर जाएगा. बट यू हैव टू इंश्योर कि ये फाइनेंशियल ईयर के डेट, ये दोनों डेट विद इन द फाइनेंशियल ईयर के हैं, दैट यू हैव टू इंश्योर. सो अल्ट वाउचर में जाएंगे सिर्फ परचेज में और वहां जाके F2 को प्रेस करेंगे, वहां जाके एक्टिवेट करेंगे आगे उसको, फिर F2 को प्रेस करेंगे. तो अल्ट वाउचर में जाने के बाद में आपको क्या करना है, वहां पे यस करना है, यूज इफेक्टिव डेट फॉर वाउचर एंट्री, फिर F2 प्रेस करना तो ये आ जाएगा. और ये लिंक भी है जो आपको पूरे गाइड देगा और दिस. सो यदि आप 9 बार एक ट्रांजेक्शन को एडिट करते हैं तो 1 2 3 4 7 8 9 9 बार उनका ट्रेल किसने किया, कब किया आता है, और 9 बार वैसे ही क्या किया आता है. पूरे के पूरा एडिट लॉग का वीडियो टैली वाले केस में ये लिंक है, टैली का ये लिंक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो ये लिंक है जहां पे आप पूरे के पूरे एडिट लॉग पे वीडियो है दैट यू कैन सी, एंड दिस वीडियो विल हेल्प. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, हाउ टू ऑडिट इफ देयर आर रेक्टिफाइड और डिलीटेड एंट्रीज. प्लीज डोंट थिंक कि डिलीटेड एंट्रीज को हमें चेक नहीं करना पड़ेगा. Deleted entries with the audit trail feature are never deleted. These are there in the software. The deleted entries are there in the software. किसने delete किया, कब delete किया, क्यों delete किया. So you have to inquire कि क्या, क्यों delete किया, क्या this is relating to some fraud, क्या cash transactions को delete किया गया, क्या कोई बैंक अकाउंट मल्टीपल खुलवा के उसको delete किया गया,
क्या कोई एक्सपेंडिचर ओवर स्टेट किया गया? सो दीज यू हैव टू इंक्वायर. यदि ऐसा कुछ होता है तो यू हैव टू टेक ए कॉल. Rectified, how to, if there are so many rectified entries, but so you have to test in case of deleted entries or rectified entries, whether these deleted entries or rectification is for maintaining the books of accounts which reflects true and fair states of affairs of the company. यदि आप ऐसा करने के लिए एडिट और डिलीट करते हैं तो वो जस्टिफाइड है, वो डिलीट और rectification justified hai, otherwise not. The next question is, can company maintain partial or full books of accounts in Google Sheet or Excel? Google spreadsheet क्या होता है? इसमें you can maintain, but it is say if it is इसमें trail का feature जो रहता है is Excel में trail का feature नहीं है, so you can't. But the question is the relevant ecosystem is there? The answer is perhaps no. The answer is perhaps no. So you can't maintain books of accounts in Google spreadsheet or Excel. Excel is without audit trail. उसमें तो और भी maintain नहीं कर सकते हैं. Rules. Then can company import data from Excel into the accounting software or export the data? So the next question is, आप क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं. यहाँ पे FAQ 25D why we will discuss this question in detail. Financial statement are in agreement with the books of accounts. So as I shown you कि हम जो रिपोर्ट करते हैं 143 में, वहां पे we show कि book financial statements are in agreement with the books of accounts. So before the signing date, each and every transactions are entered in the books of accounts. You have to ensure of each client. So please assess the time and energy and staff which will require for this. You have to ensure कि सारे clients के लिए ये इंश्योर हो गए हैं before the date of signing. अभी भी आप शॉर्टर नोटिस करके जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है उनका you can sign, वो 27-28 सितंबर तक you can sign, but you have to ensure that the date of signing के before सारे के सारे क्लाइंट के जो हैं ये हो गया हो. The next question is, should we split the company data on 1st of April or today? माने date of signing the audit report, after the signing of report. The answer is perhaps कि हमको this is a by way of suggestion. In Tally what we do is split the data. So please do it after signing of audit report. क्यों? After signing of audit report पे सारे के सारे adjustment पास हो जाएंगे. Now if you split, then this will be perhaps more accurate. क्यों? नहीं तो आपको दो जगह एंट्री करनी पड़ेगी रेक्टिफिकेशन की, जितनी भी अप्रैल से लेके डेट ऑफ साइनिंग तक. So that is perhaps will trail generate for in both the data. What I am trying to tell, हम सारे के सारे क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं वो भी लेंगे. प्लीज हम at the end of the session after say 15 minutes we will take all the questions. So please raise every questions after 15 minutes. So the next question is, can the company maintain books of accounts or manual books of accounts? The answer is yes. The answer is yes. Yes, you can maintain manual books of accounts. The question is, can the company maintain books of accounts partially? से पेटी कैश क्या कंपनी क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है मेंटेन कर सकती है क्या? द आंसर इज परहैप्स यस. द आंसर इज परहैप्स यस. यदि पेटी कैश केवल मेंटेन कर रही है, बाकी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर रही है, क्या ऐसा हो सकता है? द आंसर इज यस. तो उस केस में क्या होगा? से 50,000 या 1 लाख रुपया हम हर महीना या एट द एंड ऑफ जो मिनिमम कुछ मिनिमम बैलेंस आता है 15 दिन पे ट्रांसफर कर रहे हैं पेटी केस में, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है. और आप पेटी केस जो है मैनुअली मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है. क्या फिक्स एसेट रजिस्टर मैनुअली मेंटेन कर सकते हैं बाकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विद ऑडिटियल फीचर है? द आंसर इज परहैप्स यस.
कर सकते हैं आप ऐसा. So how to report accordingly we will see. कैसे रिपोर्ट करेंगे, फॉर्मेट, ड्राफ्ट फॉर्मेट we will see. क्या कंपनी हमारे ग्रुप कंपनीज में क्या होता है से एक रियल एस्टेट ग्रुप है वो, या और कोई ग्रुप है, वो एक ही कंपनी के नाम पे सॉफ्टवेयर लेते हैं ना. उन 100 कंपनियों का जो टैली है या डेटा है वो एक ही सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर होता है. द आंसर इज, द क्वेश्चन इज, क्या दिस इज नॉट ए रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन विदाउट charging something? You are giving benefit to your related parties. Is this not a related party transaction? The answer is perhaps yes. This is also a related party transaction. May require disclosure. The question is, क्या इनकम टैक्स और अदर डिपार्टमेंट स्क्रूटनी के केस में या सर्वे हो गया वो लोग नहीं देखेंगे? स्क्रूटनी के केस में क्या वो 2 साल के बाद में ट्रेल नहीं मान सकते हैं क्या? द आंसर इज यस, मान सकते हैं. द आंसर, द क्वेश्चन इज, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई सर्वे हो गया या सर्च हो गया या ईडी या अदर डिपार्टमेंट या आरओसी खुद इंस्पेक्शन पे नहीं जा सकता है क्या टू चेक whether the proper books of accounts has been maintained? The answer is yes. These things can happen. So, my dear friends, please report accordingly. How to report if user ID are not created, however, other requirements are complied with. So, मैंने जैसे कहा कि इंटरनल, ये एक इंटरनल कंट्रोल है कि यूजर आईडी क्रिएट होना चाहिए, लेकिन 1 महीना 2 महीना के बाद में उन्होंने यूजर आईडी क्रिएट किया. इस केस में क्या होगा? यूजर आईडी जो मैंने स्क्रीनशॉट शो किया वहां पे वो परहैप्स ब्लैंक शो करेगा, वहां पे नाम नहीं रहेगा. वो 2 महीना बाद के जो ट्रांजेक्शन है वहां पे ही शो करेंगे. तो इस केस में आपको, दिस इज ए फेलियर ऑफ इंटरनल कंट्रोल. लेकिन ट्रेल तो है, ट्रेल तो शुरू से है, थ्रू आउट द ईयर है. सो अकॉर्डिंगली ट्रेल के केस में यू कैन रिपोर्ट की है, लेकिन इंटरनल कंट्रोल के केस में यू कैन टेक कॉल कि आपको क्या, यू कैन रिपोर्ट अकॉर्डिंगली. सेम इन केस ऑफ 12, नंबर 12, यूजर आईडी डिले क्रिएट की गई. There are so many backdated entries that are in past. So proper books of accounts maintained है कि नहीं है? The answer is yes. Trail है कि नहीं है सॉफ्टवेयर में? The answer is yes. The question then arises, क्या मैं एक पैरा इंसर्ट कर सकता हूं क्या कि many of the transaction के केस में backdated entries है? The answer is yes. You can separately insert one para. There are so many backdated entries that you can insert. Now, fraud, please have a look on this decision. What it says: fraud in relation to affairs of the company or body corporate means any act or omission or concealment of any fact committed by any person or any other person. तो हम जो ऑडिटर हैं एनी अदर पर्सन में भी कवर हो जाएंगे, एनी अदर पर्सन में भी कवर हो जाएंगे. और एक्ट, एक एक्ट के द्वारा से द स्टेटमेंट दिया कंपनी के अकाउंटेंट ने कि ये जो बोगस एक्सपेंडिचर पास हुआ था, ये 7 सितंबर को पास हुआ, ट्रेल विल रिफ्लेक्ट दैट, और ये ऑडिटर के यहाँ हुआ से. सो दिस इज एन एक्ट. उसने एक स्टेटमेंट दिया, दिस इज एन एक्ट. योर that can reflect कि some of the person is involved in a fraud, but omission is also covered. What it says, omission is also covered. आपको ऐसे ऑडिट करनी चाहिए थी as per the standards of auditing, standards of accept, but आपने वैसे नहीं किया. That may also covered. So that and penalty कितनी है? If the amount is more than 10 lakh, it can be up to 3 times of the amount of fraud. And imprisonment provision is also there. So this is not compoundable. This is not compoundable because 10 years and such the it says
after the imprisonment, the words is and. So even you can't go to NCLT and say compound this offense. So this is non-compoundable offense. Then the question arises, क्या हम एक्सेल में अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं क्या? Somebody said me, एक्सेल में तो हम की के द्वारा एंट्री कर रहे हैं और या दिस इज बाय हैंड एंड दिस इज बाय हैंड. सो हम जो एक्सेल में हैंड के द्वारा एंट्री कर रहे हैं, कीपैड के द्वारा, हाथ के द्वारा कर रहे हैं, तो दिस इज ए मैनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट. Somebody questioned me. Then I said, the manual, the expression manual has not defined in the implementation guide. However, then we have to take what its dictionary meaning is. So Oxford Dictionary में when I found it is done by hand rather than by machine. मशीन के द्वारा होने से, so you have taken the help of a machine. So as you have taken the help of a machine, this is not permissible. This is not by hand. Manual means pen के हाथ से लिखा हुआ with the. Then this FAQ 25D, what it says? It says the first part is perhaps not relevant for us. Second part is more relevant for us. What it says, please read it. In the user computing tools like spreadsheet may be used to record transactions or for preparing calculation of amount to be recorded. Where it will be recorded, amount will always be recorded in the software. So you are working or you are making the calculation in Excel, and this amount you will record in the accounting software. This is the situation. So what it is happening with some of our clients, they are maintaining accounts without inventory. Please note, I am discussing a case of a client who is maintaining inventory either manually or in Excel. So in that case, he is not maintaining the inventory in the accounting software, say Intel. So the tally books of accounts is without inventory. So in that case, a question arises: can we calculate the value of opening stock and closing stock in Excel and feed the data of found the value of what we found the value in the accounting software? The answer is perhaps yes with this implementation guide, FAQ 25D. So what it says, in this situation, in such a case, for instance, they have taken an example of tax liability. I am taking an example of calculation of the value of inventory. In such case, however, the accounting entries may not get auto-populated directly to the accounting software from such spreadsheet. So from spreadsheet, you will not auto-post directly into the software. You will manually feed the data of output in the accounting software. This is the situation. So in such a case, the spreadsheet should not be treated as part of the books of accounts, and spreadsheet may not attract the audit trail requirement. So in my opinion, you can, after this FAQ 25 device implementation guide, you can, if you're calculating the value of inventory in this Excel and you're putting in the software, this is also allowed. The question is, we should pass all entries before, say 6 or 7 December. Say this is an example for that is the date of signing of the financial statement. So if you for shorter AGM, shorter notice, it can be up to 28 September also. So please pass all entries. Please make sure that every entry is passed. So how to audit if there are so many deleted entries? So in this case, you have to see these related entries. These entries are related to reflect proper books of accounts. Means
accounts which reflects true and fair state of affairs of the company. For that, these have been created. So some wrong entries has been passed. So you have to so they have deleted it. So accordingly, you have to ensure. So same is the case of for edit entries. But suppose edit entries are एडिट क्यों हुआ नरेशन में हम बैंक स्टेटमेंट हम एंट्री करते थे और शाम को यूटीआर नंबर मिलता था आरटीजीएस करके, तो हमको यूटीआर नंबर को इंसर्ट करने के लिए नरेशन में चेंज करने के लिए एडिट किया. सो इट इज फॉर मेंटेनिंग मोर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट. सो दीज एडिट एंट्रीज आर अलाउड. इफ entries are edited to understate income or overstate expenditure or misstatement, such edit of entry will result in fraud are not acceptable. How to report if accounts are maintained manually? So let us take this example. On 30th March 2023, the board decided to maintain books of accounts manually. On 30th June 2023, board decided again to switch over to maintain books of accounts using accounting software using audit trail feature, since he may have got problem in generating so many reports which were easily available in the accounting software previously, or perhaps the person who he had not getting the adequate manpower, or he has left the service to maintain the person who is maintaining the books of accounts manually. So the board decided to switch over. So in such a situation, I think there is no violation. An auditor may report the following: the books of accounts has maintained manually from 1st of April to 30/6/2023 and in accounting software from 1st of July 2023 to 31st/3/2023. Further, based on our examination, which includes test check, the company has used an accounting software for maintaining its books of account, which has the feature of recording audit trail facility, and same has operated throughout the said period from 1st July to 31st/3/2024 for relevant transactions recorded in the software. Further, during the course of our audit, we didn't come across any instance of audit trail feature being tampered with. Additionally, the audit trail feature has been preserved by the company. So blah blah blah. Now number 2, what you can write, the books of accounts सारे के सारे पूरे साल में जो है बुक्स ऑफ अकाउंट जो है 40 कंपनी के सारे के सारे जो है मैनुअल रिकॉर्ड्स मेंटेन. So you can write the books of account has been manually for the financial year. That this you can write. How to report if audit trail feature had maintained for broken period? So there is a violation. From 1st July, the company has maintained in a software with audit trail feature. Before that, it has not. So in previous example, or broken period, they had maintained in manually. But in this example, they had not maintained manually, but they had maintained in a software without audit trail feature. But after that, so for partial period, they are maintaining it. So there is a violation. The auditor must report the following. Based on our examination, which include test check, the company has used an accounting software for maintaining books of accounts, which has feature of recording audit trail facility, and the same has operated from 1st July 2023 to 31st/3/2024 for all relevant transactions recorded in the software. Further, during the course of audit, we didn't come across any instance of audit trail feature being tampered with for the above said period. Additionally, the audit trail feature has been preserved. However, in our opinion, but you can write this, यदि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिफ्लेक्टिंग ट्रू एंड फेयर स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी है, तो आप उसको लिख भी सकते हैं कि भाई
ये मेंटेन तो हुआ है. However, in our opinion, proper books of accounts reflecting true and fair states of affairs of the company as required under section 121 of the Companies Act 2013 has been maintained. This you can add. How to report if audit trail has not been maintained during the year. So सारे के सारे period में ही violation हो गया. So this is a violation. What you can record based on our examination, which include test check, the company has used an accounting software for maintaining its audit trail books of accounts, which doesn't have the feature of audit trail feature. However, in our opinion, proper books of accounts which reflect true and fair state of affairs of the company as required under section 128(1) has been maintained by the company for the financial year, page 40. So this you can. Number 7. Should the company pass bulk entry at quarter end? The answer is no. We should not, because why? Because substantial part of the company, यदि आप after end of the financial year या quarter end में आप quarter end में ही सारा का सारा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, so आप quarter end में जाके उसका proper books of account maintain कर रहे हैं. 3 महीना substantial part of the quarter आपने maintain नहीं किया. So we shouldn't go to a path which is a risky path, but we should try to maintain the books of accounts, perhaps for smaller companies also, till at least manually or fortnight. This is what I'm trying to say. Should the company pass a bulk entry? No. I am also sending the relevant updates. These updates are relating to income tax, GST, ICI, Companies Act, and some other issues. So more than 45,000 chartered accountants have joined our WhatsApp group. If you want to join our WhatsApp group, please WhatsApp to this number. I will send you the link to join the WhatsApp group. Now we can take questions, if any. Naveen. Yes, in case anyone has question, you can unmute yourself one by one and ask the questions. And sir has already shared his WhatsApp number, so we can also post the question over there. Sir will definitely answer at his convenient time. If anyone has any question, you can unmute yourself and ask. So PPT we will share with you. PPT will circulate. I will circulate in my WhatsApp groups. PPT I will circulate in my WhatsApp group by tomorrow. The PPTs I will circulate in the WhatsApp group. Now you have any question, you can unmute yourself and you can ask, please. Excuse me, sir. Sir, what is the penalty? Sir, One what by is the one, penalty? One by one, please. Mamta ji is asking the question, right? Please ask, ma'am, please. Penalty. Hello. Hello? Sir, did you hear me? No. Yes. Now we can hear. Please tell. What is the penalty if the audit trail is not maintained? What is the penalty if audit trail is not maintained? So whom the penalty will be levied? Whose duty was it? Company. Whose duty was it? The company. Right. So company duty was it. So let us examine this. किसका वायलेशन हुआ? 128(1) का वायलेशन हुआ. ये रूल्स जो प्रिस्क्राइब हुए 128(1) में प्रिस्क्राइब हुए, और 128(6) बोलता है कि इस सेक्शन का यदि वायलेशन होता है तो ये पेनल्टी लगेगी. रूल्स प्रिस्क्राइब हुए 128(1) में, और इस सेक्शन का यदि वायलेशन होता है तो इस सेक्शन का वायलेशन होने से 128(6)
86 states the penalty, which we have already discussed. Okay. Anyone else? या Yes. दिस इज नेहा हियर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि अभी ऑडिट ट्रेल हमको 1 अप्रैल से करना चाहिए था, ठीक है। फिर जुलाई से हम वो कर रहे हैं, 1 अप्रैल से जून तक हमने नहीं किया। तो हम खाली ये रिपोर्ट कर दे कि 1 अप्रैल से लेके जून तक मैनुअल हुआ था, एक्सेल में हुआ, उसके बाद ऑडिट ट्रेल में हुआ। इज इट अलाउएबल? नहीं, एक मिनट। क्या कंपनी ने, द क्वेश्चन इज, देखिए द क्वेश्चन इज, क्या आप एक्सेल में मेंटेन कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। आप एक्सेल में नहीं मेंटेन कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज, क्या आप मैनुअल मेंटेन कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस, आप मैनुअल मेंटेन कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज, क्या आप ब्रोकन पीरियड के लिए मैनुअल में मेंटेन कर सकते हैं क्या? तो मैनुअल इज परमिसिबल वन, क्योंकि आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन नहीं कर रहे हैं दिस। तो आप यदि मैनुअल में मेंटेन कर रहे हैं तो आप ये रिपोर्ट यदि कर देते हैं कि इस पीरियड में मैनुअल में मेंटेन हुआ, तो आपका काम हो जाएगा। आप तब आपको तो ये रिपोर्ट करना ही पड़ेगा ना कि आप, वो कंपनी ने 2 महीना का मैनुअल में मेंटेन किया है और उसके बाद में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में विद ऑडिट फीचर में मेंटेन किया है। यदि ऐसा किया है तो आपको अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप जो है क्या किया है कंपनी ने, आपको उसके हिसाब से करना पड़ेगा। जैसे मैंने टिप 4 में दिया था कि इस केस में कंपनी ने क्या किया था कि बोर्ड कंपनी ने 2 महीना जो है मैनुअल में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की। तो आप यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि बुक्स अकाउंट्स आर मेंटेन मैनुअली फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड, और आप फर्दर जो है वो सारा रिपोर्ट कर दे रहे हैं कि सर इस इसमें पीरियड मेरा से इस एक पीरियड। क्वेश्चन चेंज है। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन चेंज है, जैसे 1 अप्रैल से जून तक मैंने मैनुअल किया, फिर सारा चीज ऑनलाइन में सारा चीज जा रहा है। आप भावार्थ को समझिए, सारा चीज ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है। आप भावार्थ को समझिए। यदि कंपनी ने 2 महीना मैनुअल में किया है तो आप वैसा रिपोर्ट कर सकते हैं इन माय ओपिनियन, और उसके बाद यदि ऑडिट फीचर किया है अकॉर्डिंगली आप इसके हिसाब से कर सकते हैं। समझ गए? ओके सर, थैंक यू। हाँ हाँ। Anyone else has any other question? Sir, I think the उसमें देख लो, PPT was very उसमें exhaustive. Sir, my question, हाँ sir, my question is that the books are not yet closed since Yes, 31st. Hello, सर, sir, my books are the company's books are not yet closed since sir, please we are close it. Please close it before you sign the audit report. You Okay. are giving in the audit report that financial statements are in agreement with the books of accounts. I had shown you. You are writing. Okay, You are writing. So before the signing of audit report, books must be closed. Please ensure this for all of your clients. Please ensure this for all of your clients, even if certain notice is required. So it is very, sir, very, whether we have ये हो to, sir, सकता whether है we have to qualify, क्या? sir, whether we have to qualify that backdated entry has been made. So what you are saying, there are so many backdated entries in the books of accounts, right? Just right. Now, Just like that. now you have to justify this. I am not a Reliance company. My argument is, Reliance company has adequate manpower. It has adequate resources. The financial statement itself reflects that it has resources. It can maintain books of accounts every day, even if every second transaction. But mine is a very small company which doesn't have even salary I am paying.
if I am maintaining the books of accounts say monthly, it will be adequate compliance of section 128 in my opinion. So majority of entries, if it is passed fortnightly, weekly, fortnightly or monthly, in my opinion, you are maintaining proper books of accounts. And rest of entries, if you are passing, later on also, the adjustment into has to be passed near to the, say, you are, say, after April, May, June, July, August. So that won't be a much problem. But before the date of signing audit report, you have to ensure that trial balance is in agreement with the financial statements are in agreement with them. That you have to ensure. Thank you. Thank you, sir. Anyone have any other query? You can unmute. और चैट बॉक्स में देख लो कोई क्वेश्चन है क्या. मैं इतनी देर में 1 मिनट में आता हूँ. मेरे को हाँ थोड़ा सा 1 मिनट में आता हूँ. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Please hold for 1 minute, sir. Okay. Yes, please. Sir, Yes. yeah. I'm Krishna from Bangalore. Sir, can you please wait for just 1 minute, sir, because he's just taking he has just taken a minute break. I think he has some emergency or something. So just wait for 1 minute. Yeah. I will wait. Yeah. Thank you so much. Yes, please tell me. Hitesh. Yes, Krishna yes. ji from Bangalore was asking some question. I'm on the line. Yes. Sir, Yeah, I'm on the please. line. So it's a Yes, please. very closely held company, only Right. husband and wife. And we would like to have this calling this AGM at shorter notice. So shorter notice means only 2 shareholders are husband and wife. We can take the consent from them. But what would be the last date for passing the journal entries in that event for shorter notice? When I call the AGM at shorter. Otherwise, See, it depends on the length of your notice. If you are giving 1 day's notice, so say on 28th, even 20th of September, you can give, you can sign the balance sheet. So it will depend on the length of the notice. So आप यदि 1 दिन का नोटिस देते हैं, आप समझिए बात को, आप यदि 1 दिन का नोटिस देते हैं और सारे शेयर होल्डर एक्सेप्ट करते हैं, in case of closely held company, it is allowed. Only 1 day. 1 day notice is, yes, if it is accepted by the shareholder, what is the problem? So okay, we will say only 5 days notice I am giving means. So 5 days notice, 7 days notice also you can do, and accordingly you can sign on say 21st September or a date, and by 21st September you pass all entries. Yeah, if I am giving the notice on 21st of September, accordingly you decide. I am saying you decide. Date that is not a problem. Okay. Assuming that I am giving it on 20th of September notice, so up to that I can I pass the entries, na? Right. Because date of your signing the report and generation of UDIN will be 28th September only. That is right. But
up to journal entries and all, we can pass up to the date of this 20th. All entries, sir, all entries must be passed before before the date of signing. That is the key. That is the key. Before the date of signing. Okay, Right. okay. Before the signing of audit report. You are somewhere. Before the date of signing of audit report, sir. Before the date of signing of audit report. Suppose auditor is signing on 28th September. So before the date of signing, the accounting books of accounts are in agreement with the books of accounts. Otherwise, you will be reporting in contravention. Okay. Till the time we have the time to pass all the Right. Thank you so much. Okay. Bye. नितेश जी, हाँ बोलिए सर, जैसे अपने क्लोजिंग एंट्रीज तो बोलते हैं कि आज पास करेंगे, दैट इज अ बैकडेटेड एंट्रीज, वो तो अलाउड ही है। ऐसा है, देखिए अलाउड है क्या आपको समझना पड़ेगा। बैकडेटेड एंट्रीज कितना बैकडेटेड है, कैसी कंपनी है, एवरीथिंग यू हैव टू सी। छोटी कंपनियां हैं, कोई स्टाफ नहीं है, आप मंथली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, परहैप्स इन माय ओपिनियन इज अलाउड। ठीक है, अब उस मंथली में बैकडेटेड हो रहा है, परहैप्स दिस इज अलाउड। आप टेस्ट, देयर आर टू टेस्ट, वन इज क्या आप ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं विच रिफ्लेक्ट्स ट्रू एंड फेयर स्टेट्स ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ऐसा मेंटेन कर रहे हैं? यस, मेंटेन कर रहे हैं। ये आपका इससे क्लियर हो गया कि आप बोल रहे हो कि द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड शो अ ट्रू और फेयर व्यू स्टेट्स ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब ये क्लोजिंग एंट्री, अब जो है क्लोजिंग एंट्री बाद में पास हुई, एडजस्टमेंट एंट्री बाद में पास हुई, कुछ एंट्रियां बाद में पास हो रही है। हमारी छोटी कंपनियां हैं, वहां पे महीने में 15 दिन में एक बार एंट्री पास हो रही है, बैकडेटेड एंट्री पास हो रही है। नीतीश जी, छोटी कंपनी, मैं अगर छोटी कंपनी छोड़ भी दूं, क्लोजिंग एंट्रीज आर पास्ड आफ्टर द बैकडेट ओनली। यस, तो वो तो न फेयर है। Sir is talking about basically if any entry has a material effect on the profit or the books of accounts, like अगर आपका बैंक स्टेटमेंट है तो सारे के सारे एंट्री जो है आप एक महीने के एंड में मार रहे हैं। द क्वेश्चन इज, क्या सारे के सारे एंट्री आप अप्रैल में या जून जुलाई में मार सकना है क्या? द आंसर इज द एंट्रीज विल इटसेल्फ रिफ्लेक्ट कि आपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर मेंटेन ही नहीं किया। तो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है वो समझिए आप। नहीं, मैं तो समझ रहा हूं कि मेरे को क्लोजिंग एंट्रीज आर अलाउड एंड एनी एंट्रीज विच इज सेट ऑफ एंट्रीज इज अलाउड, बट कितने जन है वो प्रैक्टिकली समझ रहे कि बैकडेटेड एंट्री, बट इट इज नॉट अ बैकडेटेड एंट्री। आज सैप में भी 31 मार्च की एंट्रीज जून जुलाई ऑडिटर मरवाते हैं। हाँ ठीक है ना, दैट इज अ सेट ऑफ एंट्रीज, दैट इज एडजस्टमेंट एंट्री, दैट इज अ क्लोजिंग एंट्रीज, वो तो अलाउड ही है। Even if it is a backdated, but it has nothing to do, it does not impact the fairness and trueness of the books of accounts. So backdated entries are allowed, basically. नहीं, अब सर इज टेलिंग, सर कैन आई ऐड सर, एक्चुअली आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका कोई मटेरियल अरे उनका आप जो बैकडेटेड एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं बैकडेटेड एंट्रीज में अलाउड है, ठीक है ना? करेक्ट। Anything which is set of entries or to move like depreciation entry or GST के monthly set of entry I am passing after in month September 2024। जैसे इनपुट से आउटपुट सेट ऑफ करते हैं अपने जीएसटी की, कैश की एंट्रीज के साथ वो सेट ऑफ करके जीरो बैलेंस खड़ा करें कि मेरा क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है जीएसटी में, दैट इज पास्ट से इन सितंबर 24 में खड़ा होकर पास कर रहा हूं एवरी मंथ। अप्रैल 23, मार्च मई 23 का सितंबर 24 में खड़ा होकर पास करो, दैट इज अ सेट ऑफ। नाउ आप ये नहीं कह सकते कि हम जो है कैश का एंट्री जो है 6 महीने बाद का आज मार रहे हैं, कैश बैलेंस ही नेगेटिव चल रहा है। कैश बुक इज मेंटेन्ड मैनुअली, वो तो आपने बोल ही दिया। नहीं, अरे मैंने कहां बोला, आपने तो समझा नहीं ठीक से। वो तो समझ गया मैं, कैश बुक इज मेंटेन्ड मैनुअली। Who is saying cash book can be maintained manually?
आप सारे के सारे बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर रहे हैं, केवल कैश बुक वहां मेंटेन कर रहे हैं, वो तो मैंने कहीं नहीं कहा। मैंने वो हम कहा लिख सकते हैं ना। केवल कैश बुक, अरे नहीं कर सकते हैं आप किसी भी चीज को स्ट्रेच कर देते हैं, लेकिन गुप्ता जी कैश बुक तो मेंटेन मैनुअली होगा कि वो कैसे करेंगे बताइए फिर। कैश बुक सारे के सारे लेजर्स का आपस में इंपैक्ट है, कैश बुक कैसे मैनुअली मेंटेन करेंगे आप? कैश बुक आप मैनुअल मेंटेन कर ही नहीं सकते। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में यदि मेंटेन कर रहे हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ही मेंटेन करना पड़ेगा। सारे पेटी के कैश सारे बुक लेजर्स में उसका इंपैक्ट है एकदम। पेटी कैश का अलग बात हो गया। पेटी कैश में क्या करते हैं आप? 50,000 लाख रुपया महीने का महीना या किसी एक पीरियड के अंत में, या बैलेंस उतना हो गया तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पेटी बस कैश की उतना ही मैंने नोट बात किया। कही, आप उसको नहीं ले जा सकते सर। आप चीजों को स्ट्रेच, कहीं का चीज कुछ कहा गया आप दूसरी जगह ले जाके उसको, वैसा नहीं होता है। नहीं, सपोज अ टर्नओवर ऑफ 5 करोड़ एंड टोटल कैश एक्सपेंसेस ऑफ इससे कोई मतलब नहीं है। 20 लाख। कैश बुक आप सुनिए, ऐसा नहीं हो सकता पैरेलली आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं मैनुअली और बैंक बुक आप मेंटेन कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं हो सकता। दीज आर इंटर रिलेटेड, सारे के सारे लेजर्स में इनका इंपैक्ट जाएगा, सारे के सारे लेजर्स पे इनका इंपैक्ट जाएगा, हर आदमी के लेजर्स पे उनका इंपैक्ट जा सकता है। ठीक है, थैंक्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। I think, sir, it's up. और कोई क्वेरी है तो देख लो तुम, Yes. इसमें चैट बॉक्स में है किसी क्वेरी तो रिप्लाई कर। Chat box में you can pass control should be there to prevent any fraudulent control. ठीक है, ये तो it's a comment, not a question. No backdated, ठीक है, backdated. Monthly GST entry set off, ठीक है, that can be done. You have already told that. It's discussed. Sir, please clarify once again on practical questions. Can company import data from Excel to accounting software? Can Person company? is here. Person is here. और किसी का कोई क्वेरी है तो छोड़ो, सुनना, जिसको क्वेरी पूछना है वो खुद ही पूछ ले, ठीक है? अब तुम पुराना जाके पर्सन ही नहीं जाएगा। Yes, query because पूछने वाला। I think all the questions have been answered. हम पढ़ रहे थे So उसको। any last time we are asking if anybody have any query, you can unmute. Hello. हाँ बोलिए। Hello. Yes, sir, please. Are you sharing this whatever you have discussed in showing and all? Yes, Are yes, yes. Yeah, are you Yes. sharing definitely? This I will share in my WhatsApp groups. You can Yeah, take it from there. Sharing means I have to go, I have add on there. Okay. The Sir, not and our, it is also available on the YouTube channel of Views Exchange CS Study Circle. So if you want to visit any part or any portion of the slide, you can visit the live channel of Views Exchange and see the अच्छा video. नितेश जी, हाँ it is not Please, sir. sent over email. Sir, this shall be WhatsApp to you. Sir, the number is already there on the screen. You ping me okay. that number. And You will be sending to WhatsApp. Okay. So ठीक है। I will send in my WhatsApp groups, please. Huh? I will send in my WhatsApp group. All of you must be a member of our my WhatsApp group. I am getting the WhatsApp messages and all. Okay, fine. I will send in the WhatsApp group. हाँ कोई क्वेरी पूछ रहे थे? हाँ नितेश जी, बोलिए सर। आप सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ सर, मेरा एक क्वेरी था जो अभी बीच में डिस्कशन हो रहा था कि जो जैसे सितंबर में या अगस्त में हम लोग डिप्रिसिएशन एंट्री पास करते हैं या कोई एरर दिख जाता है, कोई सेटअप हो जाता है, माने जर्नल एंट्रीज जिसका कोई एक्चुअल में ट्रांजैक्शन इफेक्ट नहीं है, वो अलाउड है कि नहीं? एकदम अलाउ है, लेकिन सारी की सारी एंट्री बिफोर द यूनिट जनरेशन या वो बिफोर डेट ऑफ साइनिंग हो जाना चाहिए सर। हाँ ओके सर, गॉट इट। ठीक है सर, थैंक यू। वो हाँ, एनी अदर क्वेरी? एक और कोई पूछ रहे थे ना अभी? I don't think. Yes, sir. I also don't think anyone has any query. And let me inform all of you that it's the last seminar by sir this year because the code of conduct is in place.
all the best to sir from all of us for his candidature. First of all, I would like to thank all the guests for keeping patience, asking the questions, and making the session so interactive. And secondly, I would like to thank sir for being available and sharing his insights and answering all the questions so patiently. And sir, Pallavi ji is also telling all the best, sir. So with these words, I would like to conclude this presentation, and it's the last seminar by sir on Audit Trail this year. So all the best, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Yes. Thank you so much, Naveen. Thank you so much, Views Exchange. Thank you so much, everyone. Even at 5 today, the seminar has announced, Yes, and sir. you have come it's in almost 10 large p.m. number. tonight. Yes. So in 2-3 hours notice, you came and you attended in large numbers. Thank you everyone for coming. Thank you so much, sir. I'm ending the session, sir. Thank you.